जितने भी डिफेंस के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज हो, चाहे आपका एनडीए हो, टीए हो, आपका सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, 2025 के लिए we have brought a concise video. I had promised you I am going to deliver a video which deals with all this. क्या है इस वीडियो में? All defense exercises that is for Army, Navy, Air Force, along with जितने भी नई वेपन्स इंडिया ने एक्वायर किए हैं या टेस्टिंग फेजेस में उनकी बात, एंड वेरियस ऑपरेशंस ड्यूरिंग द लास्ट 1 year वी हैव कवर्ड इन दिस. वेल, मेरे सोर्सेज क्या रहे हैं? पीआईबी. उनको पूरा डिटेल से पढ़ के आई हैव गॉन थ्रू इट, द हिंदू, एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स एंड वीडियोस फॉर यू. सो लिसन, आपको 1.5 घंटा तो देना पड़ेगा, पर आपके कंफर्म्ड क्वेश्चंस हैं. आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं, आपको खुद से पता लग जाएगा कि कितना मुश्किल हो जाता है. तो आपको ये वीडियो क्या करना है, एंड तक देखना है, प्रॉपर कंसंट्रेशन से देखना है, एंड कीप ऑन मेकिंग शॉर्ट नोट्स. आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा, आप हमारे नीचे जो मेंशन नंबर्स हैं आप उन पे फोन कर सकते हैं और आप ये वीडियो मांग सकते हैं, और या मैसेज कर दें. दैट विल बी इजियर सो दैट वी कैन डिलीवर द सेम टू यू. Let's not waste any time and let's start with the videos. Okay. LCH Prachand. What's it? Light combat helicopter. Who makes it? HAH. It is basically, what's the name? Prachand. Why is it very important? Because it is a high altitude helicopter which is there. High altitude helicopter. AMCA. Recently, the government of India gave nod to make AMCA. AMCA would be basically what? It is a which generation? A 5th generation aircraft that we are planning to manufacture, make in India under ADA. What is ADA? Aeronautical what? Defense Acquisition and DRDO. In accordingly with that, they are trying to develop it. Is it clear? Next, we have BrahMos. BrahMos is basically now everywhere. It is strip-borne. It's also surface. It is airborne. It is surface-borne. It is also underwater now. So BrahMos 2.0 is also coming, which is supposed to be a hypersonic. एक होता है supersonic, एक होता है hypersonic. Okay. In hypersonic missiles, we don't have any movable parts. Because if you have movable parts, there's a chance of creation of heat. So वो नहीं होता. Is it clear? Now we come to KC-1 FRA. What is that? KC-135. ये क्या है? It is basically a mid-air refueler which we are using for, which we've taken it from America, so that we don't have to stop anywhere. We can just refuel and move on here. ATACs क्या है? Powered military artillery from DRDO Bharat Forge, which is now being taken by India. Agni Prime क्या है? It's a ballistic missile. What is a ballistic missile? It tends to go into the space and then come back. That's what we are saying. Rudra M2 क्या है? It's on which aircraft? It's on Sukhoi. It was the Indian indigenous weapon which is there. BrahMos is also on Sukhoi. Gaurav, long range glide bombs, which is again made by DRDO. Glide bombs, 1000 kilo का bomb है. Basically, it is a huge category bomb. It is, what is the purpose of glide bomb is? आपने यहाँ से छोड़ दिया, it will glide accordingly, and GPS navigation से it tends to hit the targets. Is it clear? That's a glide bomb. What is the recent glide bomb that we made? What's the name of it? Gaurav. What is VLSRM? Virtually launched surface to air missiles. Is it clear? Short range surface to air missile is the recent launch which we've launched. Microwave obstructant shaft rocket that is delivered. Akshatir kya hai? It is 107 units. It is network air defense command system. आकाश तीर क्या है? Basically it tells us कौन से में क्या यूज करना है. अभी रिसेंटली हमने जो अपना खुद का यूज किया वो कौन सा है? अभी हमने क्या किया है? What we've done is we used our own. We are making our own air defense system. Is it clear? Air defense अब पहले तो मिसाइल्स बहुत एक्सपेंसिव है. अभी हमने देखा रिसेंटली ईरान वॉर में क्या हुआ, जो उनका फेम्ड आयरन डोम है वो भी फेल हो गया. इजराइल में अटैक्स हुए, आयरन डोम भी क्या हुआ, वो कंप्लीटली फेल हो गया. So इसको काउंटर करने के लिए there are number of weapons that we are constructing. It's also laser weapons which tend to hit the target with a laser.
That is what we are constructing. QRSM, that is a mobile range short air defense. Again, everything is air defense. INS Surat क्या है? It's a destroyer. It will be AI enabled. बहुत important है. What is Surat? ऐसे हमारे को पता लगा ये जो है, इसे क्या? सूरत, हिमगिरी, ये सब है. INS विक्रांत क्या है हमारा? एयरक्राफ्ट कैरियर. Where was it made? Cochin shipyard. So we have, this is indigenously made. अच्छा, जो प्लेन्स होते हैं जनरली आपको बोले जब टेक ऑफ करते हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर्स में, उनको वापस जब जब वो नीचे लॉन्च करते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए भी एक मैकेनिज्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्च करने के लिए मैकेनिज्म होता है. इंडिया के पास कौन सा मैकेनिज्म है? कैटापल्ट. जैसे गुलेल नहीं मारते थे, दैट इज व्हाट वी हैव. पीछे कर देते हैं. So aircraft is standing on it. As soon as they release it, the aircraft tends to gain a lot of momentum with it, and that is when it takes off. Which are the recent planes that we bought for aircraft carriers? Rafales. This is a new induction that we have done. Rafales, around 26 are bought. 4 are twin-seater, whereas 22 are single-seater. Okay, अब aircraft है, इतने छोटे से स्पेस में कैसे रुक जाता है? F-35 तो है नहीं कि भाई वर्टिकल टेक ऑफ कर लिया, लैंडिंग कर लिया. क्या होती है? जैसे तो स्टील वायर्स होते हैं. स्टील वायर्स नहीं होती, टेल हुक बोलते हैं ऐसे. हाँ, स्टील वायर्स होती है एयरक्राफ्ट कैरियर पे लगी, उनके पीछे लगता है टेल हुक. जैसे तेरे पीछे हुक लगा दी तो भाग रहा था, भागता रहेगा. Is it clear? So what happens? We put it. That's what we call tail hooks. That is put just जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तो नीचे टेल हुक होता है, जो स्टील वायर के साथ होता है. देन इट गेट्स, उसको पीछे खींच लेता है. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट इतनी स्पीड पे एयरक्राफ्ट को स्टॉप करना. इंडिया के पास कैटापल्ट है. अमेरिका कौन सा यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. वो बोलता है कैटापल्ट से भी बेटर है और छोटा रनवे चाहिए. मोर प्लेन्स कैन बी लॉन्च्ड मोर क्विकली. कैटापल्ट को भी वापस करने के लिए टाइम लगता है वापस स्पेस में. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मच फास्टर है बट मोर एक्सपेंसिव. तो हमने क्या यूज किया? इंडिया डज नॉट हैव दैट मच मनी, तो हमने क्या यूज किया? कैटापल्ट. मेजर डिफेंस एक्सरसाइजेस, डेजर्ट हंट बहुत सिंपल है, मैंने बताया था क्या है. ऑल 3 स्पेशल फोर्सेस. आर्मी की स्पेशल फोर्स कौन सी है? आरएसएफ. नेवी की? नेवी मार्कोस. एयरफोर्स गरुड़. प्रचंड प्रहार. प्रचंड प्रहार कहाँ पे? हाई ऑल्टी. नोमैडिक मंगोलिया. कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया. वरुणा क्या है आपकी? नेवल ड्रिल विद फ्रांस. और क्या है फ्रांस के साथ? कौन सी है? गरुड़. और इंदिरा किसके साथ है? नेवी के साथ. सॉरी, रशियन नेवी. इज इट क्लियर? तरंग शक्ति किसके साथ है? इट वाज इंडियन एयरफोर्स लेड 11 नेशंस इन व्हिच दिस वाज देयर. एक्सरसाइज आक्रमण कहाँ पे है? LOC. दैट वाज जस्ट बिफोर द ऑपरेशन सिंदूर. हमने क्या बोला? हमने बोला हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो रात को प्लेन्स डिप्लॉय तो होने थे, पाकिस्तान को तो लग रहा था, और हमने क्या बोल दिया? जो हमारे यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था जब ब्लैकआउट हुआ, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन शील्ड. इसे क्लियर? सिंदूर और शील्ड. हमने बोल दिया कि हम तो भाई ब्लैकआउट कर रहे हैं, रात को हम कुछ नहीं करेंगे, रात को हम सिर्फ लोगों को बोलेंगे अपना ये तुमने वो रहना. That is the case. Now, conventional warfare has completely changed. अब वो पुराना warfare खत्म हो गया. What is the new warfare all about? Drones. How to negate drones. अब हर कोई देख रहा है कि कैसे drones को तोड़े, कैसे वो करें. हमारा जो इंडिजिनसली बिल्ट है वो क्या? आकाश थी. अभी रिसेंटली हमने एक और जो लोअर ऑर्बिटल के लिए यूज किया वो क्या है? भार्गवास्त्र. तो 2 हैं सरफेस. सोलर इंडस्ट्रीज है. सोलर इंडस्ट्रीज मेक्स भार्गवास्त्र. 2 सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है. एक होता है जब हम, बिकॉज वी कैन नॉट, अब आयरन डोम है, आयरन डोम की एक मिसाइल आपकी 1 मिलियन की है. वो एक सस्ता सा ड्रोन 10,000 का बेचते हैं. 10,000 का ड्रोन कहाँ 1 मिलियन? सो हु इज फेसिंग मोर ब्रंट ऑफ इकोनॉमिक्स? इजराइल. So you cannot use Iron Dome everywhere. You cannot use S-400. S-400 की यूज भी नहीं हुआ. पाकिस्तान ने कौन सा कोई मिसाइल छोड़ दी? That is S-400. Similarly, S-400 will fail where? Recently it discussed. S-400 कौन सी मिसाइल में फेल कर जाएगा? Hypersonic. No missile is making. उसके लिए क्या कर रहा है? Only America is making. What is that? They have recently called it what? Golden Low.
जैसे आयरन डोम है उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन डोम, डोम गोल्डन डोम. Oh, it's a wonderful system that President Trump announced. Oh, wonderful system. It's going to stop everything. So it's basically costing more than $5+ billion, which we cannot afford. It's supposedly $5+ billion is just starting. $500 billion तक जाएगा उसका costing to stop hypersonic missiles. Hypersonic missiles field Mach 8, which is approximately, we are talking about 11,000 kilometers per hour, using ramjet. Scramjet होता है, एक ramjet होता है. I'll explain to you. 2025 is called the year of reforms by Indian Army, which is by Defense MOD. Year of reforms क्या है? Basically हमने क्या किया, वुमेन परमानेंट कमीशन बना दिया. 2025 में क्या हुआ? फर्स्ट गर्ल पासिंग आउट ऑफ NDA, परमानेंट कमीशन. Is it clear? NDA में तो कर दिया. Soon I believe it's going to be there in your CDS also. तो CDS IMA के अंदर भी तो जाना ही पड़ेगा अभी. IMA के अंदर if they start opening up soon, it will be there for CDS also. So that is the case. Defense acquisition procedure, Indianization list, record exports. हमने सबसे ज़्यादा exports किया. हमने क्या बताया था, क्या क्या exports कर रहे हैं हम? ब्रह्मोस, पिनाका, आकाशदीप, ये सब exports. ये सब exports. अब कौन सी ships कहाँ से बनी है? मैसडॉन शिपयार्ड कहाँ पे आपका? मुंबई. ये मेजरली क्या बनाएगा? इसको अभी रिसेंटली अवार्ड भी मिल चुका है फॉर मेकिंग विच वेपन्स, एनीवन, विच दिस थिंग. इट मेक्स बेसिकली सबमरीन्स. ये सबमरीन्स बनाता है. अभी इट इज रिसेंटली बीन गिवन और इट इज कोलैबोरेटिंग विद फ्रांस टू मेक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. अभी जितनी भी सबमरीन्स हैं वो किस पे चलती हैं? डीजल. न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स डोंट हैव टू कम अप इन द एयर. मतलब एयर कंप्रेस करने के ऊपर आने की जरूरत नहीं है. द पावर इज बीइंग जनरेटेड बाय डीजल इंजन. सो वी कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर. मैसडॉन डॉक, रिमेंबर दिस. INS नीलगिरी, इट्स प्रोजेक्ट. ये क्वेश्चन आया था कौन सा? 17A स्टेल्थ नीलगिरी. दूसरा क्या है? एक तो नीलगिरी हिमगिरी होएगा. दूसरा क्या होएगा जो सिटीज के नाम पे है? सूरत और ये सब. INS सूरत क्या है? प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर. आई विल एक्सप्लेन यू फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर आल्सो. डिस्ट्रॉयर्स कौन से हैं आपके? 15B. फ्रिगेट्स क्या हैं आपके? 17A. ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमने कोलैबोरेशन किया है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उसको बोलते हैं. तो मैसडॉन डॉक से क्या क्या बनाया? INS सूरत क्या है? सूरत क्या है आपका? डिस्ट्रॉयर. फ्रिगेट्स क्या है आपके? नीलगिरी. सिटीज क्या है? डिस्ट्रॉय कर देंगे. सिटीज में डिस्ट्रक्शन होगी, उससे याद रखिएगा. तो 15B क्या है? प्रोजेक्ट. 17A, that is the case of it. INS Bagshir is a Scorpion class submarine which is now being made. कौन सा है? INS Bagshir. Also, सबसे important, it is the first one in which we have launched what? Hydrogen fuel cell passenger craft. Clear? किसको दिया है? It is the first where we are transitioning into green energy. क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर क्राफ्ट. कोचिन शिपयार्ड मेन किसके लिए? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट? अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने होंगे तो कहाँ पे जाएंगे? कोचिन शिपयार्ड. सबमरीन जो होगी तो सबसे ज्यादा कहाँ पे जाएंगे? सारे मैसडॉन डॉक. याद रखना. ये मेन किसका, इसका मेन पर्पस क्या है? इसकी एक्सपर्टीज किसमें? एयरक्राफ्ट कैरियर्स. सो अकॉर्डिंग टू यू, इज एयरक्राफ्ट कैरियर गुड और बैड? America has 11 of them. We have 2 of them. Russia has only 1. China is making 3. It is like a aircraft carrier अकेला तो जाता नहीं है. It's like a city. Submarine जाएगी, frigate जाएंगे, destroyer जाएंगे, refueling जाएंगे, ammo truck जाएगा. It is like a city. We are talking about 5,000-6,000 people together in different ships all working together. 5,000-6,000 people. तो अमेरिका को इतना 2 सेकंड किस लगा? अमेरिका ने क्या किया, जब अभी B-2 बॉम्बर जा रहा था, एक साइड से तो B-2 बॉम्बर का अटैक कर दिया, दूसरी साइड से उसने क्या किया? पर्शियन गल्फ में अपनी क्या भेज दी? It sent, in the Strait of Gulf of Oman, it had sent its aircraft carrier. वहां से वो फायर कर रहा है टॉमहॉक मिसाइल्स. अब it doesn't have to be अमेरिका को उधर आने की जरूरत नहीं है. अमेरिका can send its aircraft carriers and all its frigates, destroyers. What do? They're deployed there. वहां से फायर कर रहे हैं ईरान. अब ईरान बेचारे को क्या चाहिए? इट नीड्स एयरक्राफ्ट
फिर एक बेस चाहिए लैंड करने के लिए, फिर वो रिफ्यूलिंग करेगा, फिर से उठेगा, फिर से उड़ने जाएगा, तब तक पता है. So that is what these aircraft carriers tend to do. India has two of them. Suppose एक repair हो रही है, दूसरी चल रही है, but aircraft carriers और generally है. We are not aggressive. We are more of defensive. Because हमें जो last air chief थे उन्होंने बोला अंडमान निकोबार पे है ही, not air chief, the CDS. He said Andaman Nicobar we use it as a floating island or a floating aircraft carrier. But we are using it as defensive. We needed to be, अगर aggressive होना है कोई country को dominate करना है, what does it requires? It requires what? Aircraft carrier. अमेरिका operates 11, सोचो कितने 600 जहाज उसके ऑपरेट करते हैं, 600 एयरक्राफ्ट. इतने तो कोई कंट्री के एयरक्राफ्ट नहीं है जो उसके पानी में घूम रहे हैं. उससे क्या पंगा लेगा कोई, क्या कुछ कह सकता है. That's why America's economy as a naval might is huge. That's why it can go anywhere. It is not afraid of fighting any wars. Of course, nuclear power weapons makes a difference. Okay, so submarines are there. We are also now developing submarines. We'll be discussing it. We are discussing about the new submarines which are coming. Recently, we also got the new stealth frigate from Russia day before yesterday. Cochin shipyard clear. क्या क्या बनाया? मेपल एंड माल्पे एंड मुल्की. फिफ्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर ships. That's what it did. Starts hybrid service operation vessels किसके लिए बनाया? Wind farms किसके लिए? Scotland. Hybrid service operation. अब because इसका मेजर तो काम खत्म हो गया, इसने क्या बना दिया? एयरक्राफ्ट कैरियर खत्म कर दिया. So इसके पास अभी ज्यादा काम नहीं. छोटी छोटी शिप्स पे अगर छोटा छोटा आएगा तो ज्यादा काम. Remember that Malpe and Mulki, what is it? It is the anti-submarine shallow water. Shallow water क्या है? ये सिर्फ कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि अंडर डीप सी जाए सबमरीन्स को चेक करने के लिए. क्लियर हो ना? शैलो वाटर क्या है? ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए. तो जैसे हमारे पास गाजी आया था, गाजी वाज देयर टू सिंक एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? वी रिक्वायर शैलो वाटर बिकॉज इट हैज टू कम क्लोज बाय. दैट इज द केस ऑफ इट. इज इट क्लियर? जीआरएससी निर्देशक क्या है आपके पास? व्हाट इज निर्देशक? निर्देश क्या होता है? कोस्टल एरियाज. It is for patrol vehicles. INS हिमगिरी क्या है? 17A frigate. Is it clear? नीलगिरी क्या है? 17A. सूरत क्या था? Destroyer. Is it clear? 15B. Began construction of 13 hybrid ferries of Kolkata Hooghly River. Goa shipyard. Triput. Two Talwar class project 1356 frigates. This is a very small frigate, not a big one. Fast patrol vessels. ये किसके लिए? Coast Guard, Admaya and Akshar. Launched Madhur Pratap, the first indigenous pollution control vessel. Samudra Pratap क्या है? Indigenous control vessel. Admaya, AA से याद करना. Admaya और अक्षर क्या रहेगा आपका? Coast Guard. India USA defense deal KC-135 we've already discussed. Refueling aircrafts so that our planes can stay. अब क्या था कि हमारे planes कुछ certain time तक हवा में रह सकते हैं. उसके बाद क्या होता है? They have to come back for refueling. तो उनको हवा में रखने के लिए क्या होता है? You require refueling. So you can keep them for a longer period of time. Suppose we were just practicing, या फिर हम क्या कर रहे थे? हम तो पाकिस्तान की तरफ we were moving, फिर वापस आ जाते, फिर moving, फिर वापस आ जाते. So उनको ये लगता है कि चलो अब तो गए, इतना तो ज़्यादा fuel नहीं कर सकते. So just as a surprise element, you require the refuelers there. Is it clear or not? Defense Technology and Trade Initiative. Very interesting. जो B-2 bomber था, यूएस ने चलाया, कितने आवर्स कंटिन्यूस फ्लाई किया? सोचो. 37 कंटिन्यूस आवर्स फ्रॉम यूएस, flew all the way with refueling and hit the target and then started the attack. 7 B-2 bombers. One B-2 bomber is $2 billion. One F-35 is 100 million. So you can basically buy from one B-2 bomber 20 F-35s. Now imagine 7 were sent by US. We were talking about 140 F-35s. हमारे यहाँ पे 36 लेते हुए हम रो जाते हैं यार, इतना पैसा तो है नहीं. And it was sending that much. That's the case of it. Defense Technology and Trade Initiative that we are doing with US, where we are saying let's have integration of weapons and everything. India, Israel, Hermes,
That is the case of it. 4 Israel bid drones to be assembled at Adani Defense. एक और हमने इनसे क्या दिया, हार्पॉन. ये यूज हुआ था हार्पॉन अभी रिसेंटली. जो आपने वो वीडियो नहीं देखी, कराची की थी या लाहौर की थी, जो उनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय किया. If you see in Operation Sindoor में, that was Harpoon. These missiles. They basically it's called kamikaze drones. और आपने वो देखा होगा जब वो नीचे भी जा रहा था, it creates that sound like a diving bomber, जैसे पुराने वाले होते थे. That was the case. Barak 8 is medium range surface to air missile defense, which again was something that we used in which one? Operation Sindoor. इंडिया रशिया S-400. अभी दो हमारे पास 2 रेजिमेंट्स और आनी है. 5 तो आ चुके हैं, 2 more have to come. T-72 and T-90 tanks have to be upgraded. हमारा खुद का इंडिजिनस टैंक का नाम क्या है? जोरावर. It is a light indigenous tank specially for high altitudes. Continued Su-30 MKI in Russian origin. MKI means make for India. That's why Su-30 MKI में जितने भी इंडियन वेपन्स हैं, चाहे ब्रह्मोस जिसने हिट किया उधर, वो सब were from Su-30 MKI. जो सेकंड पोजीशनिंग थी, not from Rafales. जो सेकंड टाइम जब हमने हिट किया पाकिस्तान. Okay, defense equipment exported by India. ब्रह्मोस किसको दिया है? Philippines. Which other country are we giving it to? Vietnam, Indonesia, and Brazil are talking about it. Akash, surface to air missile. Armenia. Akash is for defense. Attack के लिए क्या है? Pinaka rocket systems. Pinaka, which other countries are asking? Poland, Indonesia, Nigeria, and France. RT, जो हमारी वज्र गन है, वज्र ammunition, ये किसके लिए? UAE, Saudi Arabia, Ukraine, and all the other nations are asking for it. Akash तीर क्या है? Because of this is the quick reaction surface to air missile. Akash 3 से याद रखना. Quick reaction surface to air missile. Okay. Tanks and armaments we have already sold across Africa and Southeast Asia. Now we come to Rudra M2 air to surface missile. It was tested on Sukhoi M30. Is it clear? Gaurav, glide bomb again on Su-30. Su-30 now is getting what? Upgradations. That is what we have now deals with Russia. Gaurav is what? Long range guide. Hypersonic missile. First hypersonic missile was tested on 16th November with more than 1500 kilometers range. Hypersonic, if we possess it, no air defense can stop it. Till now, no air defense can stop it. Whatever you use, they cannot maneuver it. It is too fast to be stopped, right? And recently, if you look at the former ISRO chief, he also said to stop or intercept this, we require many satellites in the space. उतना अभी है भी नहीं. So हमारे पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना किसी और के पास है. But अमेरिका क्या बना रहा है? Golden Dome जो मैंने बताया. It's the only one which has already been sanctioned. That is the case. इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं. Okay, is it clear? LRCM क्या है? Long range. What is the purpose? Long range what? Attack. Is it clear? Land attack cruiser missile. Long range land attack. वो शॉर्ट्स क्या है? मैन पैड्स क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इग्लास. ये हमने कहाँ से ले रहे हैं? रशिया. अगेन ये एयर डिफेंस है जो आर्मी वगैरह को दिया हुआ है. यू कैन टारगेट एनीथिंग व्हिच इज एट 6 किलोमीटर्स. ये ज्यादा दूर के लिए नहीं है. इज इट क्लियर? भार्गव अस्त्र अगेन इट इज which was recently tested by DRDO. It's a 2-layer rocket which I'll be explaining. First is just for drones. Ab drones ke liye you cannot use S-400 and everything. So what happens is, first of all, our radar picks up. So what we have is Akash 3 and everything. They tend to, Akash 3 is again a missile system. So we have this, what is the name of it? There is a radar. It's a will for me. So basically it picks up what AI is basically. Who's controlling the AI for India now? What is the name of it? INDRA. The AI tells us what are we to use. It's a drone. What is to be used? So for drone, we cannot use S-400s. So what we use is this Bhargavastra, smaller, which is there. Abhi recently हम क्या use कर रहे थे? Akash 3. जैसे कि Bhargavastra is also said 100% accuracy for drones.
अब drones के लिए we cannot use very expensive material. Is it clear? AMCA, though not a test flight, but it is the program which is included. We come to bilateral and multilateral exercises. INDRA क्या है? India and Russia. पोस्ट कहाँ पे हुआ था? कोस्टल एरिया में हुआ था आपका अरेबियन सी में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में. और कहाँ पे इसका हुआ था एक्सरसाइज? इन चेन्नई. एक्सरसाइज हार्बर फेस वाज इन चेन्नई. सी फेस कहाँ पे था? बे ऑफ बंगाल. वरुणा किसके बाद है? इंडिया एंड फ्रांस. दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे. वहां पे क्या टेस्टिंग हो रहा था बेसिकली? व्हिच प्लेन वाज बीइंग टेस्टेड? That is why it was being tested where it was there. I told you Rafale is more expensive than F-35, but its upkeep is much cheaper than F-35. Next, Tropex. Tropex क्या है? सेकेंडली, आप अमेरिका से कोई भी वेपन बाय करते हो ना, वो इंटीग्रेशन नहीं करने देते. वो बोलते हैं आपने हमसे ले ली. रिसेंटली अभी फ्रांस नहीं मान रहा था. किसके लिए? सोर्स कोड के लिए. अभी फ्रांस अग्री कर रहा है सोर्स कोड के लिए, so that we can integrate our weapons. वो बोलते हैं हम नहीं बनाते, दूसरी कंपनी बनाती है, but we'll talk to them. So most likely we might just get the source code because India has its own missiles which are way better. Tropex इसके between था UK carrier strike group. Indian European naval exercise which was there. This is recently. This is called Operation Atlanta. Counter piracy. कहाँ पे हुआ है? सोचो piracy कहाँ पे है? सोमालिया. सोमालिया कहाँ पे है? Gulf of Aden. Red Sea. Is it clear? वहाँ पे Horn of Africa. That is where we are covering it. So Operation Atlanta 2008 में start हुआ था. उसके बाद क्या है? इंडियन यूरोपियन नेवल एक्सरसाइजेस, इनकी बात करेंगे. स्क्रीनिक्स क्या है? श्रीलंका और इंडिया. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस. इब्समार क्या है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. मैंने याद करने को बोला था. आईबीएस. आईबीएस क्या है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. AIKEYME क्या है? अफ्रीका. फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव जॉइंड इन अफ्रीका. और आईएनएस कौन सी थी हमारी? सुनाया एंड चेन्नई व्हिच इज देयर. और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ? तो नाउ साउथ ऑपरेशन के लिए कौन सी है? AIKEYME. कैन आई रिवाइज थ्रू? फिर से याद करते हैं. इंदिरा किसके रूटीन है? रशिया. वरुणा किसके रूटीन है? फ्रांस. चार्ल्स डे गॉल. और दूसरी हमारी कौन सी थी? आईएनएस विक्रांत. जहाँ पे दोनों बेसिकली इट वाज जस्ट अ प्रीकर्सर टू बाय व्हिच प्लेन्स? रफेल्स. कुछ नहीं कर रहे थे. उनके प्लेन्स हमारे यहाँ पे लैंड कर रहे थे. जैसे क्लियर? हमारे यहाँ पे अभी हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कौन सा प्लेन यूज कर रहे हैं? MiG-29K. K refers to, that is for Navy. It is. What is difference क्या होता है? Normal aircraft और naval aircraft. These are lighter. इनका payload इतना ज़्यादा नहीं होता because they have a shorter runway to take off, so they cannot be that heavy. They have to be lighter. इसे क्या? ऐसा नहीं है कि फिर तो वो बोलो सिंपल सा बात है, वहां से प्लेन इधर लेके आ जाओ, थोड़े से मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं. ऐसे नहीं होता. It is a lighter plane. It is generally having much more modifications to make it more lighter and everything. इसका fuselage और ये जो फ्यूल भी पड़ता है वो भी कम होता है because कौन मूव कर रहा है? मेन एयरक्राफ्ट कैरियर. Is it clear? Okay. Varuna we've done. Varuna is France. Tropex is between the other countries. India यूरोपियन क्या क्या है? मेजर ऑब्जेक्शन क्या था? अटलांटा. पायरेसी रोकने के लिए. अदर कंट्रीज भी आती हैं बिकॉज सोमालियन पायरेट्स बहुत ज्यादा कर रहे थे हमने. अब सोमालियन पायरेट्स को यूज करते हुए यूएस ने अपनी भेज दी एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ और ये सब, फ्रिगेट्स और ये सब. अब इंडिया भी भेजता है. उससे पहले चाइना ने भेज दिया बिकॉज उसका मेन पर्पस क्या है? यूएस के सामने तो सारे बच्चे genuinely saying even China is very small. It is creating a lot of weapons and everything, but in terms of this entire thing, US is कि कोई भी उसके पास में even 50% भी नहीं आना चाहिए. वो पहले ही स्टार्ट कर देता है. कोई भी 50% भी पहुंचता है ना, मेक श्योर दैट उसको क्या कर दें? नीचे रखें. But China is progressing. हम तो पूछे ही मत, बहुत दूर हैं. हम तो चाइना से 50% पे हैं. As I said, what has started the J-35 उसको दे रहे हैं अभी Pakistan now has a 5th generation and we will not have a 5th generation. China already has it. China has already started with 6th generation. So we are way behind. So everybody knows that who has to buy a plane?
India. So everybody is offering Rafales, so we are not buying anymore. I can promise you this. So we are going to make our MK2. AMCA is way ahead further. अभी बहुत टाइम है. Okay, ACME किसके साथ है? अफ्रीका कहाँ पे होता है? तंजानिया. IBSMAR क्या है? IB. I India, Brazil, South Africa. Is it clear? INS Talwar. Nomadic elephant we've already done. किसके between है? Okay. What's the exercise? Now, if I say that all three paramilitary forces were employed. Okay. Where is the high altitude? Prachand. INS Prachand. LMH. Light from LCH Prachand is also that's the case. Khan. Shakti. This is between India and France. Is it clear? दूसरी कौन सी है आपकी फ्रांस के साथ? गरुड़ा. और कौन सी है? इंद्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेटेड फील्ड बिटवीन कॉम्बैट एंड सपोर्ट आर्म्स. टीस्टा अभी रिसेंटली हुई है. टीस्टा पर है. किसके बिटवीन? कॉम्बैट एंड सपोर्ट आर्म्स. सिविल डिफेंस कौन सी थी हमारी रिसेंटली? ऑपरेशन शील्ड. वो कौन सा था ऑपरेशन? मूविंग जस्ट बिफोर सिंदूर. एयरफोर्स के आक्रमण. That was the case of it. रेड फ्लैग किसके बिटवीन है? इट इज बेसिकली यूएस भी था, फ्रांस भी है, लुफाफा, जर्मन. ये कहाँ पे हुआ? अलास्का. दैट इज एक्सरसाइज रेड फ्लैग. अब हम एयरफोर्स की बात करें. ओपेक्स इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ पार्टनरशिप. बायलैटरल कोऑपरेशन. व्हाई डिड नाउ अनदर थिंग, व्हाई वर दे आफ्टर इट? यूएई ने भी बाय कर लिया क्या? राफेल्स. इंडोनेशिया ने भी खरीद लिया राफेल्स. और कोई यूएस का प्लेन नहीं ले रहा है. यूएस बोला चलो, पहले तो बोला F-16 ले लो. वो कहते नहीं. वो कहता हाँ, अगर हम 5th जनरेशन लेंगे. यूएस क्या करता है? हर किसी कंट्री को क्या करता था? ऑन अ गन पॉइंट. यू विल नॉट यूज दीज वेपन्स ऑन दीज थिंग्स. कंडीशन पा देता था वेपन्स के साथ. सो व्हेन दीज कंडीशंस केम, फ्रांस आया. फ्रांस वाज वेरी इरिटेटेड बिकॉज क्या था, पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की डील थी सबमरीन्स बनाने की. इसके अंदर क्या आ गया? एक और नई कंट्री दो ऐड होगी, यूके और यूएस. और ये सब दोस्त हैं. यूके यूएस कहता छोड़ फ्रांस को, हमारे साथ तो बना सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अपना पूरा अग्रीमेंट फ्रांस के साथ कैंसिल करके किसके साथ बना दिया? यूके यूएस. इससे क्या हो गया? इरिटेशन. इसके क्या बोलते हैं हम? ऑकस. एक ग्रुप बना ऑकस, पैसिफिक को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स. ए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, यहाँ से ग्रुप बना ऑफिस. फ्रांस को इरिटेटेड. फ्रांस कहता है चलो तुम्हें यही करना है तो मैं दिखाता हूँ. वो F-35 बेच रहे थे अपना सब कंट्रीज को, इजिप्ट को, ये वगैरह को. फ्रांस आया यूएई के पास. फ्री नो, जैसे हमारे को बोला है मेरा कोई रोल नहीं है, तुमने जो वेपन लगाने लगाओ, किससे अटैक करना किसे नहीं, मेरा जॉब है सिर्फ बेचना. इट टर्न्ड ओवर द डील ऑफ F-35. जितने भी जगह पे F-35 की डील थी वो सब ट्रांसफर करके किसको चलेगी? फ्रांस. राफेल्स इतने बिके हैं कंट्रीज में, कहीं पे भी नहीं बिके बिकॉज इट्स रेडार इज वे टू गुड. मेंटेनेंस सस्ती है. यूएस क्या ये है? मेंटेनेंस हर, इट्स लाइक अ BMW. 5 साल बाद, 1 साल बाद क्या बोलेगी? प्लेन बोलेगा मेंटेनेंस ही है. मेंटेनेंस में फिर किसका जाना है? यूएस. तो एवरीवन लाइक मेंटेनेंस फ्री है, आप रखो. इट टर्न्ड अवे द डील एंड दैट इज व्हाई अभी जब राफेल इतना इशू चल नहीं रहा था कि राफेल गिरा है, यू इज ट्राइंग टू पुश इट कि कोई राफेल ना खरीदे. पर अभी कोई बात नहीं कर रहा. यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-22 गिर गए बिकॉज जब वो मूविंग कर रहे थे एयरक्राफ्ट कैरियर से F-22 गिर गए. तो उनके जाम हो गए लिफ्ट पे, टूट गए. ये कोई नहीं बोलेगा. अब वही रिसेंटली देयर टॉक्स ऑफ F-35 बिंग डाउन. सो व्हाट्स, प्लेन गिरेगा तो गिरेगा. हमारे साथ भी लड़ाई होएगी तो प्लेन तो गिरेगा ही. ऐसा तो है नहीं. सो दैट इज नॉट ऑब्वियस. अब F-16 अगर सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये है, MiG-21 F-16 गिरा दिया. अब बेचारा F-16 कहाँ? इट्स अ 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट. Why is F-16 very good is because उसकी ऑपरेशनबिलिटी बहुत सस्ती है, उसका मूवमेंट बहुत सस्ता है. और तुम बात करें MiG-21, बेचारे का रेडार ही कितना है? 5 किलोमीटर. कहाँ उसका रेडार इतना ज्यादा? ऑन एवरेज जैसे राफेल है, इट कैन पिन पॉइंट, अगर मिसाइल्स भरी हो, इट कैन पिन पॉइंट 24 टारगेट्स और उनके आप एक साथ टारगेट हिट कर सकते हो विद इन इट्स रेडार. बेचारे
MiG-21 में ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं, डॉग टू डॉग फाइट के अलावा और कुछ वो कर ही नहीं सकता। सपोज F-35 से लड़ाई हो जाए, F-35 को 100 किलोमीटर दूर से मार के खत्म कर देगा। अब उनको प्रॉब्लम ये हुई, F-16 पे अमेरिका रोने लग गया, नहीं नहीं हमारा तो नहीं गिरा, हमारा तो नहीं गिरा। इट ऑल्सो सेंड इट्स कॉरेस्पॉन्डेंट CNN टू कवर इट अप कि हमारा तो नहीं गिरा, बिकॉज अगर आप बोल दोगे MiG-21 से F-16 गिर गया, इट हैज डिफेंसिव मैनूवर्स, इट हैज स्टेल्थ फ्लेयर्स जो निकलती हैं, उसके बाद भी गिर जाए तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो तब तो इन्होंने छुपा दिया। अभी इंडिया के टाइम पे तो हाँ दे आर सेइंग इट, और चाइनीज को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज कि इसका मेन पर्पस क्या है, राफेल ने इतने बिक चुके हैं वर्ल्ड अराउंड, पूछो मत। सो अमेरिका की जो डोमिनेंस है वेपन्स की वो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाउ मेनी F-35 आर देयर इन ऑपरेशन राइट नाउ? 1500 प्लस। हम Su-57 के लिए खरीदते, Su-57 कितने बने? सिर्फ 40। अभी इंडोनेशिया में, मलेशिया में एयर शो हुआ था, वे मलेशिया से हमें 5th जनरेशन चाहिए, Su-57 जा ही नहीं पाया, गया नहीं। अब उसका रीजन कोई नहीं कह रहा, क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ है, इस करके इंडिया इज नॉट बाइंग Su-57 आल्सो राइट नाउ। हमें रशिया तो बोल रहा है क्या करो, ले लो हमसे, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे बना लो, सोर्स कोड चाहिए सोर्स कोड ले लो, सब कुछ ले लो, बट द वेपन इज नॉट दैट टेस्टेड, बट वी आर वे बैक। J-35 के सामने तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और दो साइड से अटैक होपेक्स क्लियर है। सो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, जितने भी रफेल्स है ना, सो दैट्स वेयर द बेसिक एक्सरसाइज। इंडिया यूएई की बहुत होती है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, उसमें पर्पस ही क्या है, रफेल की आपस में ऑपरेटेबिलिटी क्या है, दैट इज द केस। ओके, पिच ब्लैक क्या था, कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रेलिया, Su-30M, which is there. Su-30M has also done a lot of Cobra operations and everything. Problem was only Su-30M is a Rafale twin jet or single jet engine? Twin, तभी स्टेल्थ कम है। सिंगल जेट होगा याद रखना स्टेल्थ ज्यादा होगी, ट्विन जेट रहता है तो ऑटोमेटिकली स्टेल्थ कम हो जाती है, बिकॉज उतना एग्जॉस्ट ज्यादा निकलेगा, हीट सिग्नेचर ज्यादा है। ऐसे क्लियर? ओके, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कौन सा नाम था? पिच ब्लैक। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज तरंग शक्ति। India hosted largest ever multinational air drill, 150 plus aircrafts. Phase 1, France, Germany, Spain, UK. Phase 2 was in Jodhpur. This is the place. Largest exercise ever done by India in Air Forces, which one? Tarang. Tejas, Sukhoi, Mirages, Rafale, Jaguars, C-130, C-17 refuelers, helicopters, AVACs. ये सब यूज हुआ। डेजर्ट फ्लैग किसके साथ हुआ है? MiG-29, Jaguars, these are the ones that are there. Mirages are also, which one? France. Mirage was a game changer during Kargil for us. Okay. Exercise in a choice. कहाँ पे हुआ? Greece. याद रखना। This was the largest air exercise. इंडिया की सबसे बड़ी air exercise कौन सी हुई है? तरंग शक्ति। इन कॉस्ट क्या है? ग्रीस में जो लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज थी ऑल एयर फोर्सेस, इसमें रशिया भी पार्टिसिपेट किया। ऐसे क्या आक्रमण क्या था, मैंने बताया था, जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उनको तो ये लग रहा है पाकिस्तान तो अपना एवैक घुमा रहा था। अब एवैक का काम क्या होता है? एवैक का काम होता है एयर में कोई भी अगर टारगेट आ रहा है रेडार से पहले, इट विल बी एबल टू डिटेक्ट। तो पाकिस्तान का एवैक हवा में घूम रहा था कि तो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सडनली change over. Of course, Pakistan knew that we were going to get there. Is it clear? Now we are very much making much more exercises. Just as example, we are thinking of much more exercises beforehand. If something like this happens, rather than taking one more day or saying कि हम ये कर सकते हैं, we are now going to go direct, because जो नूर खान बेस है ये सिमुलेशन रन होती थी। सिमुलेशन रन समझते हो कि अच्छा ऐसा कुछ होएगा तो हम ऐसा करेंगे, इनके ये एयरबेसिस को हिट कर देंगे सो दैट दे कैन नॉट टेक ऑफ। तो ये सिमुलेशन रन होती थी जो पहली बार फ्यूशन में लेके आए। उसमें हमें अपनी भी गलती पता लगी कि उनके, बिकॉज पहली बार तो हम उनके क्या स्ट्राइक कर रहे थे, टेररिस्ट कैंप्स। सो वी वर लाइक कि चलो लेट्स नॉट हिट द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। Then we rechanged it because Pakistan said, okay, we're going to hit your military installations, we're going to send drones and everything. So what we did after that was we changed the line of flag. Now we are even very well prepared
Now the simulations are going even further, saying if something like this happens, how do we hit them back early? Without even saying, oh, condemning the incident or something. Just like how, which country does it? Israel. Now, the entire, very interestingly, abhi US hit Israel for what purpose? Sorry, Iran for what purpose? Nuclear. वहाँ पे 60% enriched है, so you require 30% more, 90% would actually help you make a nuclear warhead. This Trump shifting और ये वगैरह saying that हम तो nuclear facilities hit कर रहे हैं और 12 दिन लगा दिए. Do you think Israel अभी आया कि ईरान की facilities hit नहीं हुई हैं properly? Iran still has, it had already moved its nuclear thing. Okay, border drill क्या थी? That was the case of it. Afterman clearance, everybody. Okay, multi-layered defense arsenal जो काम किया, आकाश missile, medium range surface to air missiles. आकाश तीर, automated command and control. ये है आकाश तीर basically. Tactical air defense command reporting system by Bharat Electronics Limited, integrated with Army Air Force sensors and enabling threat neutralization with near 100% success. आकाश तीर क्या बताता है, कौन से को क्या use करना. So basically it's like a AI telling what should be hit for which things. Is it clear or not? तो ये थोड़ी है कि जो आपने वो देखा था रेड कलर के वो मिसाइल्स थोड़ी थे. What were they? The old system जो आर्मी के पास होता था, वो जो फायरिंग का एयर डिफेंस का 70s के, उन्होंने यूज किया. 70s का एयर डिफेंस यूज किया हमने, और जो पुरानी मिसाइल्स थी उनको हमने इसमें कन्वर्ट किया. व्हाट इज MRSAM? सैम क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल. बस सिंपल है. सैम याद रखना क्या है? MR मीडियम रेंज, LR लॉन्ग रेंज, SR बस. सैम क्या है? सरफेस टू एयर. आकाश मिसाइल क्या है? सरफेस टू एयर. इट इज MRSAM. MRSAM कौन सा है? आकाश. आकाश तीर क्या है? जो बताता है क्या करना. इज इट क्लियर? भार्गवास्त्र क्या है? recently it's a 2-layered rockets made by Solar Industries and DRDO. MRSAM कौन सा है? medium range S400 by this and long range under Sudarshan Chakra. S400 को क्या बोलते हैं? Sudarshan. Used against high altitude threats including missiles, UAVs, AVACs, JF-15s, F-16s. Deep inside, it can hit deep inside because what's the range? 400 kilometers के अंदर it has a kill switch. 400 kilometers kill switch. MAR क्या है? Short air. This is converts Russian AAM जो guns है into air defense. जो आपको बोलना. This is what we use SAMAR. Upgraded legacy gun system L70s. L70 यूज की थी, जो रेड वाले नहीं थी. They were L70s being used for drones. अब उनमें हम मिसाइल थोड़ी यूज करेंगे. That was L70s. बहुत पुराने हैं. पिचोरा AA guns जो बहुत पुरानी guns हैं, with radar optical trackers for short range. Hard kill and soft kills. This one. D for counter UAS missiles. Electronic jammers, RF denial systems, EW rifles to defeat Pakistani kamikaze or swarm drones. Rudra M1. What is this? Anti-radiation. Indigenous arm used to suppress and disable enemy radars. RAM किसके लिए hit करते हैं? To suppress the enemy radars. So Rudra RAM 1, अभी RAM 2 किस पे इंडेक्ट हुई है? Sukhois. Integrated with Akash T during air defense operations. Okay, now moving ahead, this was the case of it. This is where you were asking, what is the difference between aircraft carrier, battleships, destroyer, frigates, cruisers, corvettes, amphibious assault ships, submarines, and patrol boats. Patrol boats हमने अभी कौन सी की हैं? 2. और किसने बनाई है? कोस्ट गार्ड की. कौन सी है? A से है. We talked about these ones. Is it clear? Aircraft carrier. It's the largest of them. सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा होगा? Aircraft carrier. Battleships खत्म हो गई. Battleships during World War II बहुत होते थे. Example कोई battleship का? Anything that you can think of, any battleship that you can think of. There was this Bismarck. Nobody's heard of Bismarck. Germans proud, they said कि हमारे से better तो है ही नहीं better. It used to be this huge thing, like aircraft carrier से थोड़ा size छोटा कर दो. Guns mounted, क्या नहीं, सब कुछ. उसको बोलते थे battleship. आजकल क्या है? You need fast moving. पुराने टाइम में क्या होता था? Heavy. Which is the largest RT gun ever made? Again by Russia.
पता है किस पे सॉरी रशिया बोल रहा हूँ, जर्मनी किस पे ट्रांसफर करते थे? रेल्स, जो आपकी वो नहीं होती पटरी, उसके लिए स्पेशल पटरी लगाई जाती थी मूव करने के लिए। सो जो नॉर्मल एक बोफोर है उसका 5 गुना बड़ा साइज लगा, इतनी बड़ी गन थी उनके पास, आर्टी गन जो ये यूज करते थे, 2 बनाई थी उन्होंने। देन दे डिसमेंटल्ड बिफोर दे वर लूजिंग, हारने से पहले उन्होंने डिसमेंटल कर दी, तोड़ दी। एंड द बिगेस्ट एवर आर्टी गन थी। तो अब बैटलशिप क्या होती थी पुराने टाइम में होता था, अब ये खत्म हो गया है, जैसे बिस्मार्क वगैरह, दीज वर द वंस दैट वी हैड होगी। तो उनका अब हमें क्या चाहिए? फास्ट मूविंग। तो सबसे बड़ी अभी कौन सा है? यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बड़े। ओके, पावर प्रोजेक्शन थ्रू एयरक्राफ्ट्स एंड फ्लोटिंग, दे आर बेसिकली फ्लोटिंग एयरबेस। एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले कभी नहीं चलेगा, बिकॉज सबसे इजी टारगेट है किसको हिट करना? एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर गिरा दिया तो सब कुछ ही खत्म। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब मूव करते हैं, वो अकेले नहीं मूव करते, इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग सिटीज। 5,000 प्लस पीपल मूविंग अराउंड, 5,000 एक पानी के अंदर, सोचो आसपास घूम रहे हैं 1 किलोमीटर के सर्कल में। That is what we talk about. 60 to 90 aircraft, anti-air missile defense systems and everything. R4 is the biggest one. I told you. हमारा कौन सा है? Vikram Aditya. Battleships, heavy ship-to-ship combat. It is 70,000 massive guns, thick armor. But अभी खत्म कर दिया because इनकी speeds कम हो गई है। अभी भी है, यूएस के पास है। Destroyers, fast multi-role ship, escort, air and missile defense. इसका साइज क्या है? मीडियम। एंटी-एयर, एंटी-सबमरीन, एंटी-शिप। इंडिया में कौन सी है? कोलकाता क्लास। डिस्ट्रॉयर्स क्या है? फास्ट में क्या है? एयर डिफेंस और ये सब के लिए, बिकॉज ऊपर से अटैक करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक कैसे कर सकते हैं? एयर डिफेंस या सबमरीन जाएंगी, इसके लिए उसके लिए क्या है हमारे पास? डिस्ट्रॉयर्स। फ्रिगेट्स कौन सी है हमारे पास? डिस्ट्रॉयर कौन सी है? ऐसे नाम बताओ। फ्रिगेट्स कौन सी है? हिमगिरी और नीलगिरी, दीज आर एग्जांपल। एस्कॉर्ट मिशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लाइट मिसाइल्स, टॉर्पीडो, सोनार इसमें आएगा। इंडिया में वी हैव शिवालिक क्लास। क्रूजर क्या है? Air defense to land, air to land. They are large, long-range cruise missiles. This is the case of it. ये हैं cruiser. Corvettes are coast patrol, missile, guns, torpedoes. Corvettes are the smallest. ये fast moving होते हैं. Generally coast guards. Amphibious assault ships. जो पीछे वो एक लगा नहीं होता छोटा सा हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए बना दिया, बस वो वाले. These called amphibious assault ships. Submarines, of course, there are 2 types of submarines that we have. One is nuclear and one is diesel. These are the ones. Patrol boats are the coast guards one. Everybody here, which is the biggest one? If they ask you, if you're going for navy, they're going to ask you for sure. What's the difference between corvette and a destroyer? What's the difference between a frigate and a destroyer? That is it. What's the biggest ship that we have, by the way, apart from aircraft carrier? Battleships. So Bismarck, like Bismarck was something that, read about it, the history of Bismarck. You'll get a very interesting story about it. Destroyers are what? They generally are fast moving. What are they? Anti-submarine, anti-missiles, anti-air. So basically anti-air. Which is the one which is used for attacking land cruisers? Which are the ones which are used for attacking command and control, air defense, and land attack? They're big. Frigates are what? Smaller ones. Corvettes, destroyers से फिर छोटा क्या हो जाएगा? Frigates. Order क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? Aircraft carrier, फिर क्या आएगा? Battleships. Battleships के बाद क्या आएगा? Cruisers. Cruisers आता है. Cruiser के बाद क्या है? Destroyer, फिर क्या है? Frigates. And then you have corvettes are very small, generally coast guards. Amphibious assault ships क्या है? पीछे, and you can put a chopper and small things. And last is patrol. Everybody clear with the different things? Okay. This is just an image that you can just go through it. These are the types of it that you have. Next, INS Tamil. Now I'll just go in detail. Why is this in news recently? Why was this in news? It is the commissioning of INS Tamil on July 1 in Kaliningrad, Russia. This frigate is the last of the Krivac class to be built outside India. After this, it's all going to be built in India. India Navy's transition towards Atmanirbhar Bharat. अब जितनी भी पहले ships थी वो सब कहाँ बनती थी? बाहर. अब सब कहाँ में बनने लगी? जैसे हमने एयरक्राफ्ट कैरियर लिया तो कहाँ से लिया? रशिया से बनाया था. फिर सेकंड हमने खुद से बनाया. ऐसे क्या? Okay. The commissioning ceremony will be attended by key witnesses. कौन सी क्लास है? INS Tamil. What is it?
Tamil is what? It's a frigate. Everybody clear? Which is the largest ship that we have? Aircraft carriers, then battleship, then yes, then after that, what is the other one that you have is corvettes. Then you have amphibious. That's the case. Amphibious vessels. The INS symbol is the frigate, the pivot class, a series of warships that India has been inducting over the past 2 decades. It incorporates 26% indigenous components, including the BrahMos long-range cruise missiles. So everywhere what we have integrated, BrahMos. What makes our ships really dangerous is not the ships itself, but the missiles that we have is BrahMos. So we have the best missiles that we have is BrahMos. Back. साइबर सुरक्षा क्या था? इट इज बेसिकली आईटी अटैक से जो भी होता है. अभी आपने देखा पाकिस्तान ने क्या किया? साइबर अटैक्स. सो उसके लिए क्या रन किया? साइबर सुरक्षा अंडर द डिफेंस साइबर एजेंसी इंटीग्रेटेड डिफेंस. बाय द वे टीए में इन्होंने एक स्पेशल एंट्री निकाल रहे थे फॉर एआई cyber security special, and in your defense forces also now there's a special stream in which if you want to join as AI, they're especially doing it because the next world warfare is not there. So there has been talks of इसको क्या बोलते हैं? EME नहीं इसको there is the signals को incorporate करके shift करके किसमें कर दें? AI. There's been talk of it. So arm will change. Okay. Integrated Defense Staff Headquarters. What is the purpose? Real world cyber threats. So we've already working. There's a control system that we have. Quantum secure communication. किसके between है? DRDO and IIT Delhi. Quantum क्या है? It's basically, as I said, 101010. It works on that. What is quantum secure? अगर by chance, suppose, ये बहुत important है. Disturbance कोई भी आ जाए, जब आप किसी बात कर रहे हो, when a secure quantum key is transmitted using tangled photograms and eavesdropping क्या होता है? किसी की बातें सुनना. Attempt disturb the quantum state. कोई भी सुनेगा तो automatically that is the case of it. So as early as possible, अगर quantum source communication है, and if somebody is eavesdropping, you will be able to know that that is basically to create a secure line. किसके between हुआ है? DRDO and IT. Just remember this. This is really important. I told you Rudrastra advanced hybrid drone. किसके साथ किसने बनाया रुद्रास्त्र? Soros Aerospace and Defense Limited और कौन सा है? DRDO. What is Rudrastra? Is a hybrid drone designed for battlefield operation. It can take off like a helicopter. इसको उसकी जरूरत नहीं है. So ये क्या है? Rudrastra hybrid vertically lift off drone basically बोलते हैं. इसको space नहीं चाहिए. हेलीकॉप्टर की तरह लिफ्ट ऑफ कर सकता है. इट कैन ट्रैवल अराउंड, फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस लाइक अ जेट. इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र. The versatility is difficult to detect. The drone is engineered for anti-personnel roles targeting enemy soldiers with high accuracy. INS Stubber, I've already said, ये कौन सा था? यूके के साथ, यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई थी ना, उसमें कौन ज्वाइन किया? INS Stubber. याद रह जाएगा. यूपी के साथ हमने पहले भी किया हुआ है. I'm just revising whatever, बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है. एक्सरसाइज क्या बोलते हैं? पैसेक्स. इंडिया यूके की एक्सरसाइज का नाम क्या है? पैसेक्स. और आईएनएस क्या लगा है? कौन सा था? किस में थी? अरेबियन सी. ये छोटे नोट्स हैं. पैसेक्स किसके साथ है? यूके. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल. इंपॉर्टेंट इसमें है कौन सा प्रोजेक्ट है? विष्णु. It was recently extended trajectory, long duration hypersonic missile. So when I say it reaches which speed? Mach 8, which is approximately 11,000 kilometers per hour, which is impossible for any कोई system लगा दो. It is impossible for anybody to intercept. So it uses, and it can travel a range of 1,500 kilometers. Can conventional nuclear warheads wing 1,000 to 2,000 kilometers?
The scramjet engine allows it to sustain hypersonic speed for extended purposes. Who has developed it? DRDO. It had developed the hypersonic this in 2020. What is a scramjet? कोई moving part नहीं होता. What's the purpose of scramjet? एक ramjet होता है, एक scramjet होता है. Scramjet का purpose क्या है? Air intake इतना fast कर देना when it burns the fuel very quickly, combustion. तो इसमें वो नहीं है कि fuel कि एयर के लिए कोई, बिकॉज अगर मूविंग पार्ट रहेगा, मूविंग पार्ट क्या करेगा? देयर इज मोर चांसेस ऑफ ब्रेकेज एंड एवरीथिंग. देयर इज नो मूविंग पार्ट. व्हाट्स द पर्पस ऑफ स्क्रैमजेट? It just pushes the air into the fuel intake. Fuel burns so quickly कि फ्यूल के जब फ्यूल बर्न करेगा तो क्या होएगा? Burns, no? So suddenly it starts burning. वो इतना जोर की बर्न करेगा, it creates a thrust. This thrust pushes to the speed of Mach. Is it clear or not? ये अब किस में है जो मैं आपको बताता था, ब्रह्मोस 2.0. ऑफकोर्स इंडिया ब्रह्मोस क्यों बेच रही है? ब्रह्मोस 2.0 जैसे अमेरिका है. पहले अमेरिका अभी भी F-22 किसी को नहीं बेच रहा, सिर्फ F-35 बेच रहा है, बिकॉज F-22 इज वे अहेड इन एवियोनिक्स. B-2 तो किसी को टच भी नहीं करता, इजराइल तक नहीं देता, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसको नहीं देता. तो सोच लो B-2 कब से है उनके पास, B-2 बॉम्बर्स, एंड नेक्स्ट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी तो उनकी पूछने वक्त कहाँ पे जा रही है. नाउ दिस इज व्हाट वी मेड, दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडियन एयर फोर्स आई-स्टार. आई-स्टार का फुल फॉर्म बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई-स्टार क्यों बनाया है? इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस. So what is that we are doing? Approved by, what are we doing? I-Star aircraft. S क्या है? I is intelligence, S is surveillance, T is target acquisition, R क्या है? Reconnaissance. So this involves procuring 3 advanced aircraft from leading international Boeing and Bombardier. उनसे ले रहे हैं. And the sensors and electronic systems would be prepared by DRDO. कितने aircrafts? Will provide multispectral surveillance capabilities that can detect, track, target enemy assets like radar, installation, and command post. What is the full form of I-Star? Target acquisition and reconnaissance. कि क्या हुआ क्या नहीं. That is the case. कौन से दो से पहले 3 एयरक्राफ्ट लेंगे, किसे लेंगे? Bombardier and Boeing. That's the case. Okay. INS anti-submarine warfare ship कौन सी है? Armala. We've already discussed it. ये क्या है? Shallow water. कहाँ से ली है? Garden Research Shipbuilders Engineers. ये हम already कर चुके हैं with collaboration with LNT. ये थी UN for. इसमें किसके लिए हुआ था? मैंने बताया भी है. जब भी यूरोपियन यूनियन के साथ एक्सरसाइज होती है, किसके लिए होती है? नेवी की है, किसके लिए हुई थी पर? Piracy. It's known, this is the biggest one. European Union Naval Force. The exercise will involve ships and air force from both sides. It's for anti-piracy, but Project Atlanta के अंदर. Everybody clear with this? What is the name? European Union के साथ UN for. Is it clear? कहाँ पे हुई है? Indian Ocean region. Okay. Women cadets join NDA for the first time, or they passed out from NDA from the first time. That is why we call 2025 as the year of reforms. Okay, when were first women allowed into the defense forces? MNS. In which year? 1888. Just understand this. 1962. What was the 1992? Non-medical roles, non-combat. हमने बात किया. Women entry scheme was introduced. Non-combat draft, but did not grant them permanent commission. किस year मिला permanent commission? 2008. Is it clear? Operation Shield क्या था? Blackout, sorry sir. AMCA project recently. अब AMCA में सिर्फ जो आपको important चीजें याद रखनी है, what is it? It is a twin engine, medium weight, multi-role fighter. What does a multi-role mean? There's a MiG-21 था, it's air. It was only for air-to-air combat. Multi-role means air-to-air, air-to-surface. You can do multiple things. अब Rafale सिर्फ air-to-air होता तो हम पाकिस्तान में घूम के आ जाते बस. ठीक है. So what is Sukhoi also? Multi-role.
So what it does, it can hit air to air, it can hit air to ground. That is what it is. What is AMCA supposed to be? Twin engine, multi-weight, fighter jet, advanced stealth capabilities including a stealth airframe and internal weapons. Weapons bahar nahi hote, internal. So just like F-35, you know what is internal weapons? Sukhoi mein bahar hai. So वो heat signature दे देते हैं weapons. तो ये क्या होता है? They are covered. तो जब आपको weapon छोड़ना होता है, यहाँ से open होता है, fold, फिर weapon जाएगा. Is that clear or not? तो उसका basic purpose क्या है? Heat signature रोकना. F-35 में भी ऐसे ही है. They're all inside. Is it clear? Designed for deep penetration missions, close combat and precision strikes. Approximately 25 tons and aims to enhance India's power. ये कौन सा project है? AMCA. 15,000 crores have been put aside. Which countries already have fifth generation? US, Russia, and they made with themselves. ऐसे तो पाकिस्तान में भी खरीदने वाले हैं. But China says 50% में ले लेते हैं मुझसे. तो मेरा दोस्त है. Why is China giving it at 50%? क्यों दे रहा है? Geopolitics, it wants to stop India from doing anything. Very clear. उसके पास weapons है, वो बोलता है कुछ तो मिले, और plus उसका दो फायदा है. एक तो इंडिया उस फ्रंट पे अटका रहेगा, तो पाकिस्तान जब तक इंडिया को तंग करता रहेगा, we are under problem. So वो कहते हैं दो फ्रंट पे अगर लड़ाई लड़नी है, not an issue. Is it clear? 15,000 DRDO and किसके अंदर है? Aims to deliver the project by 2035. Is it clear? ये important एक और इसमें था, ADA. ADA क्या है? Aeronautical Development Agency will lead the project. ये बहुत important. 25 private players have also submitted the bid for making AMCA. It's not only HL, but private players have also come through. Developing under ADA. What is ADA? Aeronautical Development Agency. हमारे पास material है, सब कुछ है. Problem क्या आती है? What is the biggest problem that India has in developing aircraft? Jet. The Kaveri is supposed to give a thrust of 115. 115 is its peak thrust is 85. It is workable, but it's not giving a peak thrust. Peak thrust means like you need to do maneuver. Maneuver के time पे बस ऐसे ही रखता रहे. क्या करें? Then it is not able to do a dogfight. So that's why we require that. इसे क्या? आपका क्या? AMCA में क्या है? किसके साथ है? ADA क्या है? इसे क्या? किसके साथ? DRDO 15,000 crores. Operation guidance charge. ये किसके लिए था? Against Hamas. किसने किया है? Israel. याद रखना. Guidance charge. Most likely. Keller क्या था? Manhunt against the perpetrators of which? Lashkar. This is the case. Now we come to Bhargavastra. Is a revolutionized counter drone system developed by Solar and एक भार्गव अस्त्र है, दूसरा क्या है? देखो दोनों में डिफरेंस आएगा. ये गलत. इसी में कराया था मैंने. नहीं उसमें नहीं है. ये इसमें तो नहीं है. ओके ये देखो, पहले तो ये है भार्गव अस्त्र और रुद्र अस्त्र, दोनों सोलर डिफेंस के. याद रखना, they both are from solar defense. रुद्र अस्त्र is what? Vertical takeoff of what? Vertical takeoff of what? Drones. It's not helicopter, drone है. Vertical takeoff of a drone. वो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकती है. ये नहीं है कि उसको रनवे चाहिए. That is what it is. That is vertical takeoff of drone. उसको क्या बोलते हैं? रुद्र अस्त्र. और भार्गव अस्त्र क्या है? काउंटर ड्रोन. हाँ नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ. ये दोनों किसके हैं? सोलर डिफेंस. It addresses the growing. इसमें क्या? भार्गव अस्त्र में 64 micro missiles which can be simultaneously making a formidable defense mechanism. The system consists of two operational layers. The first layer employs unguided micro rockets capable of targeting multiple drones within 20-meter radius.
ये क्या है, एकदम से 64 स्मॉल मिसाइल्स जाएंगी, ठक ठक ठक, जितनी भी ड्रोन है अनगाइडेड है, इट जस्ट गोज इन द एयर, जो भी अवेलेबल है एयर में उसको क्या करेगा, इट विल ब्रिंग इट डाउन. Is versatile, can operate in various terrains, including high altitude, excluding exceeding 5,000 meters, suitable to use for Army, Navy, and Air Force. That's exactly it. What's the thing that we had done for telling us what to hit? Akash, it tells us what to hit. Now we come to BrahMos. BrahMos was first inducted in 2001, who was known as the father of Indian missile man, Dr. APJ Abdul Kalam, because it was under his guidance we got BrahMos. BrahMos comes from two rivers, Brahmaputra and which river in Russia? Moshkov. Two rivers के नाम पे बना है, दोनों को जोड़ के BrahMos. It's integrated missile development program. BrahMos is now everywhere. Ship based भी है, हमने बात किया. Land based भी है, air launch भी है, किसके अंदर है? सुखोई. Submarine launch versions भी आ चुकी हैं, और next generation submarine launch मतलब कि अंडर वाटर से भी फायर कर सकते हैं. Next generation is 2.0, which told you इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? Scramjet. Scramjet. We are making Mach 8. That's why we are selling. No country will sell its weapon to anybody. Similarly, solar industry also produces a chemical which is 2 times more powerful than TNT, which is used in BrahMos. So we tend to hit much more. Arab drones किसके साथ थे? They were used in Operation Sindoor. कहाँ से लिया है? Israel. It's also called what? Kamikaze drones. Arab drones. Is it clear? They were also known as, this is the important thing, kamikaze drones. They combine the threat of unmanned and aerial vehicles and missiles. They can remain airborne for extended periods. They identify and strike by targets. The case of it. Recent military operations include India targeted multiple air defense in Pakistan. One strike occurred in Lahore. जो देखा नहीं लाहौर में उनका air defense पे hit करता है. There's a video of it. That is Harapis. Iglis क्या? Shoulder mounted MAPATs. What is it, MAPATs? It's basically to hit the air defense, man operated air defense. Is it clear? ये Iglis कहाँ से ले रहे हैं? Where are we buying it from? Russia. Very short range air defense. It's portable surface to air missile system. Infrared homing technology track and engage the targets. Generally ये बहुत successful रहा है, especially Igla S और America को कौन सा है वो? America was also using it. That is what we have. America has been very useful in this war versus Russia. What the name of it? I'm not able to remember. Okay, what's the purpose of Iglis? It's portable. कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, एक आदमी कैरी कर सकता है. Short range है. कहाँ तक range होती है? Up to 6 tan, altitude of 3.5. Okay. Rafale marine fighter jet कहाँ से ले रहे हैं? फ्रांस. कौन सी एक्सरसाइज थी फ्रांस के साथ? That is where we came to. पीछे क्या होता है? Tail hook. That is the purpose of it. Okay. India's longest rail tunnel. Where was it made recently? In Janasu, Uttarakhand. Yeah. Where was the longest rail tunnel made recently? In Janasu, Uttarakhand. As a part of the Rishikesh Karamprayag broad gauge link program. Largest tunnel in India कहाँ पे है? Uttarakhand. What is the name of the place? The project spans 125 kilometers with 104 kilometers or 83% consisting of tunnels. The project utilizes German-made tunnel boring machine known as Shakti. What was the machine used? Shakti. Is it clear? What was the machine used? Shakti. It's called project. Desert Flag, Atlanta, we've done this. Okay. But Project Vishnu क्या था? I've done Project Vishnu, no? What is Project Vishnu?
Yes. What is project Vishnu? Anyone? क्या? हाँ जी, कुछ जोक बताओ, प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? 2.0 के लिए प्रोजेक्ट विष्णु 2.0 2.0 एक ही चीज है, मैंने बताया, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल्स, दैट्स प्रोजेक्ट विष्णु। ऑपरेशन केलर क्या है? ऑपरेशन शील्ड, आक्रमण, व्हाट्स द हाई ऑल्टीट्यूड एक्सरसाइज नोन एज? नो। ओके, देन वी हैव इंडियाज लॉन्गेस्ट स्ट्रेट टनल कहाँ पे आपका? उत्तराखंड, जाना। याद करने का तरीका बताऊं? सिंपल, स्त्री देखी है? स्त्री मूवी, उसमें जन्ना होता है ना, उससे याद रखना। ठीक है, वो क्या है? उत्तराखंड से। वैसे ऐसे नाम भी याद रहेंगे आपको। इज इट क्लियर? जाना से उत्तराखंड, एवरीबडी क्लियर? महासागर इनिशिएटिव, व्हाट इज द केस? Mutual and holistic advancement for security and growth for all in the region. What's the full form Mahasagar? It is India's neighbor first policy. The successfully refit of Maldivian Coast Guard ship is an example. Puravi at the naval dockyard in Mumbai is a key example of commitment in Mahasagar. Mahasagar क्या है? Mutual and holistic advancement of security and growth for all. Sagar means security and growth for all in the region. Mahasagar means mutual and holistic. That is the case of it. Is it exercise desert flag? तो already बता चुका हूँ. किसके between है? UAE. That is where participation. We also went there. Objective क्या था? Interoperability. India deployed MiG-29 and Jaguar aircraft. Is it clear? Okay. Operation Atlanta we already discussed. ये किसके लिए है? Red Sea. ये किसके लिए है? Red Sea. अब रेड सी की कंट्रीज कर लेते हैं, कौन सी आ जाएंगी? याद करने का तरीका पहले, एवरी स्मॉल एलिफेंट डांसेस सो यूथफुल इन जॉय। एवरी स्मॉल एलिफेंट डांसेस सो यूथफुली इन जॉय। एवरी स्मॉल, ई से क्या हो गया? इजिप्ट, एस से क्या हो गया? सूडान, इजिप्ट एंड सूडान। अब याद रखो यहाँ पे क्या है आपका? व्हाट इज हियर, जो रेड से मार्क कर रहा हूँ? सुएज कैनाल। इजिप्ट के बाद क्या आएगा? सूडान। एवरी स्मॉल एलिफेंट, is it clear? Eritrea. Every small dances Djibouti. Order याद रखने का। Every small elephant dances with joyful. Dances so joyfully. S से क्या हो गया? Saudi Arabia. So youthfully in joy. Every elephant. E से पहले क्या है? Egypt. S से क्या आया? सूडान। एलिफेंट से क्या आया? एरिट्रा। डी से क्या है? जिबूटी। इज इट क्लियर? डांसेस, एस से क्या आया? सऊदी अरेबिया। वाई से क्या आया? यमन। आई से क्या आया? इजराइल। जे से क्या आया? जॉर्डन। दिस इज जॉर्डन। ये दिख रहा है छोटा सा? ये क्या आ गया आपका? ये छोटा सा जॉर्डन, ये इजराइल। इज इट क्लियर? नॉट एग्जैक्टली टचिंग बट यू शुड नो। यहाँ पे कौन सा आ गया? मेडिटेरेनियन सी। इज इट क्लियर? याद करने का तरीका क्या? एंड लास्ट में क्या आया? सोमालिया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हाँ, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये बस याद करने का तरीका बोल रहा हूँ, याद करने का तरीका। दिस इज गल्फ ऑफ एडन बेसिकली, ये रेड सी है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? ये आपका क्या है याद करने का तरीका? बिकॉज जिबूटी आता है, ये है। इज इट क्लियर? तो याद करने का तरीका क्या है? एवरी स्मॉल एलिफेंट, पहले क्या आएगा? इजिप्ट, सूडान, फिर एरिट्रा, जिबूटी। इज इट क्लियर? तो दूसरी साइड चले जाते हैं, कौन सा हो गया? सऊदी अरेबिया। डांसेस सो वाई से यमन, आई से इजराइल, जे से इजराइल ऊपर है, जॉर्डन नीचे। इज इट क्लियर? जॉर्डन, इजराइल, very small portion generally. This is Gulf of Aqaba.
It doesn't really touch. Just to explain to you, कौन सा है? Gulf of, is it clear? इसराइल का कौन सा पोर्ट है जो हम यूज करना चाहते हैं फॉर आईमेक? हाइफा। यस और नो? रिमेम्बर, ये है हमारा पर्शियन गल्फ से, याद है ना? यहाँ पे क्या है? यूएई में कौन सा है ये? अच्छा, यहाँ पे अभी हमने बात भी किया, ये भी किया है, पर्शियन गल्फ भी कर लेते साथ के साथ। ये पर्शियन गल्फ है, कुवैत, ये क्या है? कतर, ये सऊदी अरेबिया। पर्शियन गल्फ में ये क्या हो गया? कौन सी कंट्री आ गई? ईरान। ईरान के यहाँ पे क्या आ गई? कुवैत। यहाँ पे कौन सी आ गई? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से यहाँ पे छोटा सा ये क्या है? कतर। ये क्या है? यूएई। ये क्या है? ओमान। तो अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें, पर्शियन गल्फ यहाँ पे है, ये कौन सा है गल्फ? ये कौन सा स्ट्रेट है? हॉर्मुज। इसके पास क्या है? ऑयल। सऊदी अरेबिया के पास क्या है? ऑयल। ईरान के पास क्या है? कुवैत के पास क्या है? ऑयल। इराक के पास क्या है? इसके पास क्या है? कतर के पास। और यहाँ पे बहरीन है। हम बहरीन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे। ओमान के साथ बहुत अच्छे हैं। ओमान के साथ हमारी 3 एक्सरसाइजेस होती हैं। ओके। कतर के साथ क्या है? नेचुरल गैस। यूएई में क्या है? ऑयल। तो सारा का सारा 20% ऑयल यहाँ से निकल। तो जैसे ही ईरान ने ये बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू बी इंक्रीज। इज इट क्लियर और नॉट? सो दैट इज व्हाई पर्शियन गल्फ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से रेड सी की कौन सी कंट्रीज है? पहले ऊपर से देखो, सबसे ऊपर कौन सी थी? इजिप्ट। इजिप्ट के बाद कौन सी? सूडान। ऑर्डर बस एक बार मैप देखने पे हो जाएगी। इजिप्ट के बाद कौन सी? सूडान। एवरी स्मॉल एलिफेंट, एलिफेंट कौन सा है? एरेटा। उसके बाद जिबूटी, डांसर्स। अब यहाँ पे कौन सी आ गई आपका? इसराइल। इसराइल के बाद जॉर्डन। जॉर्डन के बाद सऊदी। सऊदी के बाद नीचे क्या आया? और यहाँ पे क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? सोमालिया। छोड़ना सस्ता क्यों है? वो टैक्स नहीं लगाते, हम टैक्स लगाते हैं। ये क्लियर है कि नहीं? हाँ, ये वाला भी ठीक है। ये क्लियर सबको? सो व्हाट इज द आंसर? क्लियर? रेड सी का फिर से बताओ क्या है? याद क्लियर है? ऑपरेशन में प्लांट क्यों है? सोमालिया के लिए। वहाँ सारी ऑयल फील्ड, सारे जितनी शिप्स वहां से पास करती हैं। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ये चीज थी 2008 में। दो तो हमारे ऐसे कवर हो गए। सिंपल है ना? अगर मैं बोलूँ, पहले ऊपर स्टार्ट करेंगे इजिप्ट। इजिप्ट के बाद क्या है? सूडान। उसके बाद क्या है? अरेटा। फिर आया जिबूटी। जिबूटी के नीचे क्या है? सोमालिया। मैं वैसे ऑर्डर वाइज आता हूँ। इस साइड पे गए इसराइल। इसराइल के बाद क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन के बाद क्या है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद क्या है? यमन। बस आपको ये कंफ्यूज याद होगी। इस साइड पे जाएं अगर हम, पर्शियन गल्फ, ईरान। इस साइड पे क्या है? कुवैत। कुवैत के ऊपर क्या है? इराक। ये क्या होना चाहिए? ईरान, इराक, ईरान। यहाँ पे क्या है? कुवैत। यहाँ पे क्या है? बहरीन। बहरीन के बाद कतर। कतर के बाद यूएई। यूएई के बाद नीचे कौन सा है? ओमान। ये कौन सी कंट्री है? बहुत बहुत टाइम पास वाली कंट्री है। इसे क्लियर हो ना? ये देखिए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। इसे क्लियर हो ना? तो ये क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? कंट्रीज होगी, फिर से कर लें। रेड सी क्लियर? अब तो खुद बताओ, रेड सी कौन सी होगी पहले? इजिप्ट। इजिप्ट के बाद क्या है? सूडान के बाद और सोमालिया। दूसरी साइड जाए, दूसरी साइड जाए, पर्शियन गल्फ में ईरान है। ईरान के इधर क्या है? इराक। यहाँ पे क्या? छोटी सी कंट्री कुवैत। यहाँ पे क्या है? सऊदी। सऊदी। सऊदी के ऊपर क्या है? यहाँ पे बहरीन, फिर कतर, फिर यूएई, फिर नीचे कौन सी है? ओमान। बस। और यहाँ पे एक सुपर सी कंट्री है। क्लियर? ओके। तो अब ये रिसेंटली एक्सरसाइजेस हैं।
We have these 4 pages left. यहाँ तक clear है, काफी है? Would you be able to revise it? This probably finishes off a lot of things for you. I don't expect anything more than that. There are certain things left. Just थोड़ा सा interesting करके बताता हूँ. चलो खत्म ही कर लेते हैं. पहले ये वाला interesting है कि MK2 DO सिस्टम क्या है. ये तो 2 एक्सरसाइज हैं. ये इसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूँ. ओके नाउ ये इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं MK2A DO सिस्टम. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है जहाँ पे DRDO ने डेवलप किया है. व्हाट इज DO? बेसिकली इट मींस व्हाट इज द फॉर्म ऑफ DO? MK2A DO. व्हाट डज DO मीन? लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. DO का मतलब क्या है? लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. अब ड्रोन इतनी मिसाइल कौन लेके आए? हमने बोला इतना तो पैसा, इतना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. So what we are developing is a laser targeted डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. जैसे फ्यूल नहीं होता है, इतना ही कॉस्ट है, बहुत सस्ता है. जैसे 1 लीटर फ्यूल लग गया उतना कॉस्ट है इसका. तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लेजर को डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स either a missile or a drone and small projectile. Is it clear? तो इसमें क्या है? Indigenously developed weapon that can engage fixed wing drones and thwart multiple drone attacks. जो अभी सोलर ने बनाया वो कौन सा, जैसे फट हो जाता है, भार्गव अस्त्र. वो क्या था? भार्गव. उसमें क्या है कि वो तो 2 सेट्स, वो कोई गाइडेड नहीं है. वो होता है कि ड्रोन छोटी छोटी फेंक दी, उसको तोड़ने के लिए ये कर दिया. इसे क्लियर? अब कोई ड्रोन आ गई और हमने बोला ये 3rd सेट ऑफ डिफेंस है जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी. अब हम क्या बोल रहे हैं? तुमने ड्रोन लेके आए, ड्रोन के लिए कुछ और चीज भी होनी चाहिए. बिकॉज इसराइल क्या बोल रहा है, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं. अब सबको प्रॉब्लम हो रही है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये सब. इसे क्लियर हो ना? पाकिस्तानी आंटी क्या बोल रही थी पार्लियामेंट में, मुझे $75 बिलियन खर्चा दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया. आंटी को बोलो इतना तो तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, इतना तो वेपन ही नहीं है तुम्हारे पास. क्लियर? तो बेचारों का एयरबेस उड़ा दिया, उनका सब कुछ. अभी तो उनका एक्सेस डैमेज हमने कोई बता नहीं रहा, उनका कितना डैमेज हुआ है. हमारा कौन सा एयरबेस उड़ा है? हमारा कौन सा कुछ डिफेंस सिस्टम उड़ गया? एक एयरक्राफ्ट उड़ गया. और कंपेयर टू देम वो खुश हो रहे हैं, हमारी कौम ने ये कर दिया, हमारी कौम ने वो कर दिया. ओके, वेरी इंटरेस्टिंगली एक और चीज, वॉर्स कब खत्म होते हैं? जब कोई दिखाने को हो. तो उनके पास अब कुछ दिखाने का तो था नहीं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दिया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया. रियलिटी तो है नहीं. ओके, व्हाट इज द केस ऑफ इट? अगर हमने बात किया अभी रिसेंटली, क्या है? MK2 DU क्या है? DEW, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन. To make it cheaper, what we are doing is basically a laser would be directed. What is it? Is cost of firing the weapon for a few seconds is likened to a price of couple of liters of petrol. 1000 रुपए 2000 रुपए के अंदर वहां पे millions of missiles. This affordability positioned as a long-term solution against low-cost drone threats. पाकिस्तान ड्रोन्स भी भेज रहा था, उसको लग रहा था कि S-400 जला दे, खुश हो जाए, तो वो तो हुआ नहीं. That is the case. और हमारे लिए कौन बता रहा है कि हमें क्या करना है? आकाश में. इज इट क्लियर? वो बता रहा है ऑलरेडी. दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग अस, किसको क्या लगाना है क्या नहीं. और वो इंटीग्रेटेड है. सो बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से ये आ रहा है और ये यूज करता है, यहाँ से ये आ रहा है ये यूज करता है. Engages targets in the speed of light. Once a target is detected by radar, inbuilt electro-optic system, it can use an intense basal beam to cause structural failure. Is developed by DRDO chess. किसने डेवलप किया? DRDO के chess. What is chess? Center for High Energy Systems and Sciences. DU system clear हो गया? MK2 DU. What is the full form of DU? Laser Directed Energy. Any doubts? Long Range Guide Bomb Gaurav. It is developed by DRDO. What is the name of it? Gaurav. Again किसके अंदर है? सुखोई. सीधा सारी टेस्टिंग सुखोई के अंदर क्यों होती है? Because it is made for India basically. It was, we have the source code, we have done it. So everything is for generally India. Precision guided bomb with a range of 30 kilometers to 150.
designed to engage targets beyond the reach of standard anti-aircraft defenses. Approximately 1,000 for high accuracy trials demonstrating a range to 100 kilometers. This is how it happens. Is released from the aircraft. The wings deployed increase the bomb's range. Who is guiding it? GPS and guided. तो एक बार छोड़ दिया weapons अपने वो wings open करता है and starts gliding towards the thing. तो हमारा कौन सा बनाया ये? Is it clear? That is the case. INS Varsha, naval capabilities commissioning of Varsha, strategic naval base for nuclear submarine. Which is a recent nuclear submarine base कौन सा बना है? INS Varsha beforehand because we are making it. Located near Rambili, is designed to provide a secure advanced facility for India's nuclear submarines, ensuring operative readiness. The base is strategically located 50 kilometers from Visakhapatnam. So, अगर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन आएंगी तो किस पे स्टोर रहेंगी? INS वर्षा 50 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम. Is it clear? न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ पे आ रही है? INS वर्षा. INS Sunaya, offshore patrol vehicle INS Sunaya, as a part of the Indian Ocean Ship. Sagar initiative क्या है? Mahasagar is collaboration. S is what? Strengthening and global initiative. सबको साथ में लेके चलना basically Sagar initiative. This event took place in Karwar, Karnataka, with Defense Minister Rajnath Singh presided. Basically, protection of Indian Ocean region. Is it clear or not? ये हो गया done. Clear everybody? Okay. Dastalik. Dastalik क्या है? It's a India-Uzbek joint exercise. कौन सी है? Dastalik. What does it mean? By the way, Dastalik, it means friendship in Uzbek. So Dastalik क्या है? Friendship. What does friendship mean? A word. Hamdard. Is it clear? What's the word for it? Dastalik. Foreign trade nodes in Pune. कहाँ पे हुआ है Dastalik? उज़्बेक के साथ. कहाँ पे हुआ है? पुणे. बस इतना याद रखिए. Clear? बाली कटल. ये इंडिया की नहीं एक्सरसाइज है. For a reason I've done this. It is US, Australia and Japan along with Philippines. Why? Because China was having a lot of issues with Philippines. यहाँ पे a lot of issues were also created, which are close to tense area in South China Sea and Luzon Strait. The previous exercise Balkan troops, American and Philippines troops participated working together by testing the ability to give follow commands. Is it clear? Okay. जैसे मैंने बोला फिलीपींस में अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, so अमेरिका के बेसिस भी हैं. तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? बाली कटल. इसमें दो और कंट्रीज अभी रिसेंटली ऐड हुई. कौन सी? ऑस्ट्रेलिया और with US. कहाँ पे है? South China Sea and Luzon Strait. Everybody clear? कौन सा है? South China Sea and Luzon Strait. Any doubts with this? This should be. There's another one that I'll send it to you already earlier, but this should be sufficient for you. Till now, we have furthermore whatever gets added up. Tomorrow we are going to start with again world organizations and जैसे अभी mapping था, बीच बीच में मैप्स उठाने शुरू कर देते हैं. अब मेरे को बता रेड सी के कौन सी कंट्रीज हैं जल्दी से. सिंपल हो जाएगा. इजिप्ट से स्टार्ट करो. इजिप्ट कौन से आ गई? साउथ